My class in continuation with CBSE Sample Question Paper 21-22. We finished with section A of 24 questions. We finished with section B with 24 questions. And now we are going to do the section C, where we are given 12 questions. Out of that we are going to do 10 questions. Sections B, we finished with 48, question number 48. Now in this, question number 49 to 54 are to be answered on the basis of the following data. Now look at this. So here in section C we have 10 questions out of 12 questions. They are to be attempted. And now look at this. This is a table which gives you the budget, the revenue receipts, the capital receipts, the total receipts, then you're talking about the total expenditure on revenue account, interest payments, then you have grant and aid for creation of capital assets and fiscal deficit. So all of that. Now this the source is indiabudgetgovernment.in. I think it's not very clear. Can you see that? Or is it clear enough? So it is 2019-2020, the actuals. And here we have the 2020-2021, which is the budget estimates. So these are the budget estimates. Now based on this table, these are the questions that we will be doing. Okay, so you got to study the table properly. I'm going to show you another one. Take a quick screenshot of it. Okay, so here are the items. Serial number, these are the items. This is the 2019-20 actuals. Okay, and here we have what is the budget estimates. I hope it's clear. And based on this, then we'll start with the questions. Okay. So 49th question is, the value of recovery of loan has dash crores between 2019-20 actual and 2020-21 budget estimate. Now you have to find out. Now looking at these options, first you just want to know it's fallen or risen by how much. So then what do? You just go up here, and this is the recovery of loans. Okay, under capital receipts as it's given. So recovery of loans is in 2019-22, 2020 it was 18,314. Okay, and 14,000. It was 14,967. Okay, so what do? Just minus and see what it is. With no percentage, nothing. So 18,316. Is that so? Minus 14,967. What you get is 3,349 crores. So what is it? It is fallen by, it's A is the option. Fallen by so much. Alright, so just, you don't have to really fill up the blank. What you have to do is mark your OMR sheet. Let's go to question 50. 50 में क्या करना है? The percentage change in the non-tax revenue between 2019-2020 actual and 2020-21, that is budgeted estimate, taking the 2019-22 as base, would be how much? So what do? You take the difference of what? Non-tax revenue.
सो वेयर इज़ अ नॉन टैक्स रेवेन्यू? तो ऊपर में लिखा ना रेवेन्यू रिसीट्स, इसमें टैक्स रेवेन्यू और नीचे में नॉन टैक्स रेवेन्यू. आपने नॉन टैक्स रेवेन्यू देखना है, इसका आपने डिफरेंस लेना है, नॉन टैक्स रेवेन्यू दोनों साल में. फिर क्या करना है, डिफरेंस को टेक द ओरिजिनल, डिवाइड बाय ओरिजिनल. सो डिफरेंस ये आ गया, लाइक आई हैव जस्ट डन इट लाइक दिस. दोनों का डिफरेंस आया 57860. फिर आपने उसको डिवाइड कर दिया बाय द ओरिजिनल. ओरिजिनल कितना था? 327,157 इंटू 100. परसेंटेज आपकी निकल गई है, वो कितनी बन गई है, ये वाला. सो दिस यू विल हैव टू डू, इसमें तो कोई और चारा नहीं है. 17.68 टू 2 डेसिमल प्लेसेस. तो ये सही है, सही आंसर है. 51, क्वेश्चन 51. आइडेंटिफाई which of the following is not an example. अब देखो not, ये बहुत ज़रूरी है. Not an example of tax revenue for the government, and you have to choose the correct alternative. तो क्या है, उन्होंने कुछ कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, तो आपको क्या निकालना है कि नॉन टैक्स रेवेन्यू नहीं है. Which of the following is not an example of टैक्स रेवेन्यू? टैक्स रेवेन्यू कौन सा नहीं है? वेल टैक्स टैक्स है, स्पेशल असेसमेंट नहीं है. इनकम टैक्स जो है वो तो टैक्स ही है, ठीक है, वो तो टैक्स है. और फिर अगर आपका क्या आता है, कॉर्पोरेट टैक्स. तो ये सारे टैक्स हैं जो नहीं, जो नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ टैक्स रेवेन्यू. क्या आ गया? स्पेशल असेसमेंट टैक्स. So special assessment tax is a non-tax revenue. Now what you have is ये जो आपने करना है नेक्स्ट क्या है कि आपका जो है 52. Identify the correct formula to calculate fiscal deficit. Fiscal deficit का कौन सा बेस्ट फॉर्मूला है? So you have to know this. ये तो बिल्कुल ही थियोरेटिकल क्वेश्चन है फ्रॉम योर बजट. सो इसमें क्या आ जाएगा? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट अदर देन बोरोइंग. बिल्कुल सही है, यही लगता है ना भाई. नेक्स्ट है टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट, या कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसीट्स, या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट. तो ए इज़ द करेक्ट आंसर, करेक्ट फॉर्मूला. ओके, नाउ वी कम टू 53. ये हो गए आपके 49 से लेके आपके जो 1, 2, 3, 4 जो क्वेश्चंस थे वे दे वर रिलेटेड टू दिस, आपने ख़त्म कर लिए हैं इसको. अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 53. इसमें है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड चूज़ द करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स गिवन बिलो. आपको करेक्ट ऑल्टरनेटिव चूज़ करना है. स्टेटमेंट 1 क्या है? रेवेन्यू and capital receipts are increasing but borrowing and other liabilities are reducing. तो कैसा स्टेटमेंट है, आपको ये देखना है, ठीक है. रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसीट्स आर इंक्रीजिंग and but borrowings and other liabilities are reducing. देन स्टेटमेंट 2, नहीं आई थिंक ये अभी भी इसी के साथ कनेक्टेड है, सॉरी. ग्रांट्स सेम वी आर डूइंग द सेम क्वेश्चन, इसी के साथ है, सॉरी. स्टेटमेंट 2 इसमें है ग्रांट्स एंड एड फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स डिक्रीज्ड फ्रॉम 2019 to 2021. तो ऑल्टरनेटिव्स हैं, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स. स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज़ फॉल्स. और फिर आ गया आपका स्टेटमेंट 2 इज़ ट्रू एंड स्टेटमेंट 1 इज़ फॉल्स. तो ये आपने देखना है. तो लेट्स जस्ट गो टू रेवेन्यू रिसीट्स. रेवेन्यू रिसीट्स बोल रहे हैं और कैपिटल रिसीट्स दोनों इंक्रीज़ कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं ना भाई.
पहले 16 था वो 20 हो गया, फिर कैपिटल रिसीट्स भी बढ़ के हो गया है ना. अब आपका क्या क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है बट बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज, बट बोरोइंग्स किधर है, दे आर इंक्रीजिंग, ये तो करेक्ट है यहाँ पे. बट बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज आर रिड्यूसिंग. तो देखिए बोरोइंग जो है एंड अदर लाइबिलिटीज एक्चुअली रिड्यूस कर रहा है. ठीक है, अगर आप देखोगे तो बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज, आई होप इट इज़ क्लियर. ठीक है, यहाँ से 9 और जस्ट सी द फर्स्ट टर्म ओनली 7, देखा रिड्यूस कर रहा है ना. सो दैट्स ट्रू. द स्टेटमेंट नंबर 2 इज ट्रू, स्टेटमेंट नंबर 1 इज ट्रू एंड ग्रांट्स. स्टेटमेंट नंबर 2 देखते हैं अब, ये क्या है. ग्रांट्स and aid for creation of capital assets decreased from 2019 to 2021. तो ऑल्टरनेटिव ये देखिए. सेकंड तो आपने क्या था, ग्रांट्स एंड एड जो है वो कहते हैं वो एक्चुअली क्या है, हैज़ डिक्रीज. नो, इट हैज़ इंक्रीज्ड. अगर आप देखोगे एक्चुअली इट हैज़ इंक्रीज्ड. ओके, so that is wrong. So if it was 18, it's gone to 20. So obviously, which is the correct statement? Which is the correct answer for 53? It's C. Statement number 1 is true and statement number 2 is. Statement number 1 is true. Statement number 2 is false. अब आ गए जी हम 54 पे. The value of primary deficit for the year 2021 would be rupees इतना करोड़. तो प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला आना चाहिए, बोरोइंग है ना, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट. आपने वो डाला, फिजिकल डेफिसिट नहीं दिखाया, बट बोरोइंग इज ऑल्सो बोरोइंग. जो बोरोइंग है, जो बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज़ जो आपको दिख रही है, बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज़ जो है, दैट इज़ नथिंग बट फिजिकल डेफिसिट. तो जो फिजिकल डेफिसिट है उसमें से आपने क्या करना है, इंटरेस्ट पेमेंट्स को माइनस करना है. इंटरेस्ट पेमेंट्स कहाँ है, ये वाला, इंटरेस्ट पेमेंट्स को माइनस करना है. सो व्हेन यू डू दैट, जब आपने ये करा, देन व्हाट यू गेट इज 88134. ठीक है, this is what we've done and this is A is the correct option. So we finished that and बस अब case study बाकी है, जिस पे 55 to 60 questions are based on this case study, which I'll take up in the next class. All right.